So we have discussed about the natrum sulph and the natrum sulph asthma in children as a constitutional remedy. We can use this remedy. Dyspnea, especially during the damp weather, must hold the chest while coughing, that we all know. That is common in bryonia. Bryonia is right-sided remedy. We can use it for right-sided. Natrum sulph is left-sided remedy. Specific modality of natrum sulph, that is 4 to 5 a.m. Even guys, you can think of natrum sulph when patient is telling you कि सर मुझे 4 से 5 में या अर्ली मॉर्निंग डायरिया हो रहा है. Especially guys, in diabetic patient, this is the specific remedy when patient is telling you कि सर मुझे रात को डायरिया हो रहा है. Yeah, I have to go 3 to 4 times a stool at early morning. In those cases, you can think of this remedy, that is natrum sulph. Doctor, we can even think of sulfur, no, in such cases? Yes, sulfur is aggravation at early morning. जब भी पेशेंट उठता है और स्टूल जाना पड़ता है, that is sulfur. जमीन के ऊपर पैर रखता है और स्टूल जाना पड़ता है, that is एलोज. एंड मॉर्निंग में 4 या 5 बार स्टूल जाना पड़ता है, that is नक्स वोमिका. And natrum sulph is early morning, that is around 4 to 5 a.m. Pain through left chest, that is natrum sulph. जब भी अस्थमा वाले, जब भी ये न्यूमोनिया वाले पेशेंट के अंदर the pneumonia resolution is delayed, in those cases we can think of this remedy. Damp weather aggravation, rainy damp weather aggravation, जो सीजन इंडिया में आने वाली है, we can think of this remedy, that is natrum sulph. We are prescribing this remedy randomly in children when there is history of allergic asthma or allergy in parental side or family history. In those cases, we can think of this remedy. Now guys, squilla. Anyone using squilla in their practice? For coughing, for respiratory complaint? Anyone? Any indication you know about the squilla? Anyone? Coughing provoked by taking a deep breath. ऊंडी सांस लेने से खांसी चढ़ती है. The remedy is squilla. जब भी मैं वार्म रूम से ठंडे रूम में जाता हूं या फिर गर्म रूम में से एसी वाले रूम में जाता हूं या फिर नॉर्मल रूम में से एसी वाले रूम में जाता हूं, then I got cough. The remedy is squilla. Coughing during measles. Guys, during measles, when patient having coughing, we can think of the remedy, that is squilla. And the peculiarity of squilla, when patient is telling you, बच्चे का स्पेशली इन पीडियाट्रिक केसेस, सर उसके यूरिन की फ्रीक्वेंसी जब से खांसी हुई तब से बहुत बढ़ गई है, इवन पासिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन. This is the peculiarity of squilla. When you get any correlation of urination with coughing, you can simply think of remedy, that is squilla. And when patient is telling you, sir मुझे खांसी के साथ छींके आ रही है, like this, छी, छी, coughing associated with sneezing, the remedy is squilla. And another remedy, that is Seneca. Seneca having coughing followed by sneezing. Open Seneca.
The remedy is Seneca. Anyone got that symptom? Yes. Cough often ends in a sneeze. जब भी खांसी आती है, that ends with sneeze. Then we can think of Seneca. And squilla is associated with sneezing. In between भी आ सकती है, last में भी आ सकती है, anywhere. Urine की frequency, especially at night, we can think of acid phos, especially in diabetic patient or even non-diabetic patient, old aged people having excessive frequency of urination, think of acid phos. Another peculiarity of squilla is child rubs face with or during cough. तो जब भी खांसी आती है, child is rubbing on the face. In another remedy, child is pressing on genital while coughing or respiratory complaint. Remedy is? Zinc. Yes, the zincum mat that we already discussed. बहुत सारे पेशेंट आएंगे आपके पास, दे जस्ट टेल यू कि सर खांसी आती है और यूरिन निकल जाता है, ड्रिबलिंग और यूरिन और पासिंग यूरिन व्हाइल कफिंग, और सर यूरिन करते करते और पहुंचते पहुंचते यूरिन हो जाता है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन. रेमेडीज आर स्क्विला, कॉस्टिगम, पल्सेटिला एंड सेपिया. कफिंग या स्नीजिंग की वजह से इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस लीडिंग 4 रेमेडीज, दैट इज स्क्विला, कॉस्टिगम, पल्सेटिला एंड सेपिया. Believe me guys, it works excellently. Even you can think of Caliphos 6x in involuntary urination in adult or even in geriatric patient or in young children in nocturnal enuresis. We are going to discuss nocturnal enuresis in very deep with the causative factors when we complete our respiratory session. This is the common remedies. The remedies we already discussed are generally used in dry coughing. When you get the symptom, that doesn't mean you can prescribe this specific remedy in dry coughing only. Guys, bryonia we are using in dry coughing as well as in wet coughing. But आपको symptom मिलने चाहिए. Symptom matters. ब्रायोनिया की थर्स्ट मिल गई, ब्रायोनिया का चेस्ट पेन मिल गया, ब्रायोनिया की एक्सेसिव कफिंग मिल गई, यू कैन थिंक ऑफ ब्रायोनिया. वेट कफ हुआ, निमोनिया हुआ या ड्राई कफ. लेकिन the remedies we are going to discuss right now, those are the remedies which specially helps in bronchitis and asthma, or especially the patient having congestion in chest. The remedies are Antium tart, the remedy is Ipecac, and the Seneca. These 3 specific remedy helps and works excellently in bronchitis when patient having congestion in chest. What are the reports we are going to do in respiratory complaint, guys? कौन से reports करेंगे? Rule out any kind of allergy, absolute eosinophil count, serum IgE levels. Yes. That is to differentiate allergic. Yes. Then? When you auscultate and you find a lot of wheeze, we can just go for a chest X-ray. Yes. X-ray में क्या लिखोगे? Chest X-ray. View. PA view. Yeah, that is PA view, not AP PA view. view. Then एलर्जी कब हो गया? ब्रोंकाइटिस के लिए we have done that. ब्रोंकाइटिस के लिए we have done X-ray,
Now, what are the other causes we have to rule out? X-ray When the patient. person is suffering from COX, we go for a gene export. Okay. We can go for a Any basic report for COX? sputum for AFB. Yes. 3 और सैंपल इससे भी स्पेसिफिक रिपोर्ट. मानटुक्स That is पर Montauk. मानटुक्स यूजुअली कोई करता नहीं है अभी बिकॉज Montex is मानटुक्स not का work. Montauk. Yeah, Montex is not Gene work. expert. When you already nobody does it. exposed, when you already Gene expert. exposed, sorry, Sir, gene expert. I'm not Yes. getting your voice clear. Please, please repeat it. I think she's saying gene expert. She's saying Okay, gene expert. gene expert. लेकिन उससे भी कॉमन कॉक्स किसके ऊपर से इनिशियली डायग्नोज इन योर प्रैक्टिस एनीवन Clinical history. यस क्लिनिकल हिस्ट्री में क्या The weight loss, evening rise of temperature, Weight loss, loss of appetite, यस may or may not be associated with cough. ओके एंड रिपोर्ट गाइस ESR is generally ESR, rule out raised ESR. और वो भी 100-200 नहीं या 50-60 नहीं that increase above 150 when you go for the reports patient बहुत लंबे टाइम से खांसी से सफर हो रहा है and you just check the CBC and ESR or ESR is more than 150 and patient having history of reduced weight guys always think of always उसके बाद you can go for all the reports आप करवाओ एक्सरे करवाओ सीटी स्कैन करवाओ whatever you need to go for it लेकिन सीबीसी और सीबीसीबी से और क्या डिफरेंशिएशन रहेगा स्पेशली फॉर रेस्पिरेटरी गाइस निमोनिया कैसे डायग्नोस करोगे Lymphocytosis. सीबीसी में क्या चेंजेस आएंगे Lymphocytes बढ़ जाएंगे. हाँ इवन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन WBC increased total count increased are you with me guys Yes. these are the common reports जब भी when patient come to you with chronic coughing in those cases always rule out the cough always and IG GP level पे IG people are not doing frequently but guys do it if you get increased IG that confirm patient is suffering from allergy so it takes time to get cure आप label डाल सकते हो you are suffering from allergy so now it takes time and every 3 months check for IG कितना reduce हुआ sometimes what is happening when patient is under your treatment and patient is symptomatically relieved but उनका जो IG level होता है that might be remain same और कई बार बढ़ता है तो explain the patient explain the relatives as symptomatically patient is relieved so not to worry about IG and if it is reduced that is good for us it must be below 50 these are the common investigations x-ray में क्या लिख के आता है when you suspect the bronchitis consolidation. consolidation is seen in pneumonia bronchitis Increased bronchovascular margins. yes BVM bronchovascular margins are prominent that is called as bronchitis that is seen in x-ray now the common remedy and we all know that is antium tart any experience you have about antium tart antium tart is one of my favorite remedy we are randomly and frequently using antium tart in our practice
And when you get bronchitis, when you don't get any specific symptom, guys, simply use that. Simply. We are giving anti-MTAR 200 TDS. If it is required, we are frequently repeating it every hourly when patient is coming to you with excessive congestion. But what is the specific symptom of anti-MTAR on which we can prescribe anti-MTAR? Any clue on which basis you are prescribing anti-MTAR? There is lot of congestion in the chest, but when the patient expectorates and tries to bring out the sputum, it rarely comes up, or very little amount is coming up. Yes. There is no expectoration, or there is very few expectoration. Although there is lots of congestion in the chest. When you examine the patient, you feel the bronchi in all the chest, लेकिन बलगम निकल नहीं रहा है. Anti-MTAR is the remedy. It helps to expel out the cough. When you prescribe anti-MTAR, कई बार patient आके बोलेगा in follow-up, सर बहुत सारे बलगम निकल रहा है. That is good sign. When congestion is inside and cough is coming out, so that is good sign. Patient को बोलो वो निकल सकता है, and if you feel that in examination congestion is reduced, then that is good sign. कैसी टंग होती है anti-MTAR की? Tongue of anti-MTAR. Milky white coated tongue. Yes, like antium crude. हम जब वो दुबे पढ़ते थे तब दोनों में डिफरेंशिएशन कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्लिनिकली मिल्की व्हाइट कोटेड टंग. That is also seen in antium crude and also seen in antium tart, both the remedies. And antium tart is thirstly or thirstless? Thirstless. Antium tart is thirsty. Coughing associated vomiting, guys. Antium tart also cover this symptom. When there is excessive congestion, and along with that, patient or child is vomiting out, we can think of antium tart. But guys, the more leading remedy is ipecac. Sometimes when antium tart fails, we are using ipecac in place of antium tart. If you already used antium tart 200 TDS, 200 QDS, आपने every hourly prescribe कर दिया, and if patient is thirstless and associated with nausea and vomiting, even without nausea and vomiting, you can think of ipecac in place of antium tart. So we have to differentiate two remedies. Both remedies affecting on pneumogastric nerve. दोनों में nauseative feeling होगी, लेकिन nausea and vomiting is more prominent in ipecac. The tongue of ipecac is कैसी है? Clear. Yes. Clear tongue. Clear tongue, along with thirstlessness. That is the key of ipecac. Always try to observe the tongue. In every case, it is not helpful, but make a habit to check the tongue and throat in every respiratory patient, even in gastric patient. एक habit डालो in your practice. Patient की pulse check करो. If you don't like to check it, if you are not able to listen the pulse, although make a habit to check the pulse. Patient की pulse check करो. That physical touch is required, guys. आपने प्रैक्टिस में सुना होगा कि बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट पेशेंट को टाइम नहीं देते. They just listen the symptom and prescribe the remedy of now you can go. Even as a super specialist, they are not checking the patient. No examination. That is frequently seen and patient is not get satisfied. Guys, always एक physical touch रखो patient के साथ. At least check the pulse. And believe me, it works excellently. आपकी मेडिसिन काम करे या ना करे, the way you dealing with the patient, that is more important. So excessive congestion,
cough is not able to expectorate, that is NTM TAT. NTM TAT की modality, time modality क्या है? 3 to 5 aggravation. That AM. is early morning, 3 to 5 or 3 to 4. We can think of this remedy. Especially in the pediatric cases, when the child is at the 6 month or 7 month, they are sometimes not able to expectorate. So in those cases, NTM TAT works excellently. When you get the cyanosis after excessive coughing and without expectoration, you can think of this remedy. That is NTM TAT. Even in breathlessness, you can think of this remedy. When there is a congestion in bronchi. NTM TAT also having that modality of spring that is mentioned in keynote. Spring and autumn aggravation. When damp weather commences, damp weather की जब भी शुरुआत होती है, in those cases it works excellently. Another remedy, as I discussed, ipecac, constant nauseative feeling, ipecac, congestion, ipecac, no expectoration, ipecac. When NTM TAT fails, you can think of ipecac. Dry, clear tongue along with thirstlessness. Change of weather and spring aggravation that we all know, that is Dulcamara and Bryonia, when the days are hot and nights are cold. Along with that, we can think of Kalisal and Natramsal. That is mentioned in keynote. Modalities, especially in aggravation. One thing I would like to share that is mentioned in keynote, child not easily impressed when NTM TAT seems indicated in cough requires heparin. When you already prescribed NTM TAT which is not responding by child, in those cases you can think of heparin. Heparin, you all know, an excessive chilly remedy. Heparin, you all know, कि slightest wind or cold wind gives aggravation. विंडो में से हल्का सा पवन आ रहा है तो get coughing or throat infection, especially soreness in the throat is a key of heparin. पेशेंट आके बोलेगा मुझे जलन हो रही है या पेशेंट आके बोलेगा मुझे soreness हो रही है. पेशेंट पेन की कंप्लेन नहीं करेगा, स्पेशली इन हेपाrin. So that is the key of heparin. When pain is radiating from throat to ear, सर मुझे कल से गले में दर्द हो रहा था, now it is radiating to ear, अभी मुझे उसकी वजह से कान में भी दर्द हो रहा है. The remedy is phytoleca and heparin. These two are specific remedy. For NTM TAT is in, you can use in the drowsiness phase. जब भी due to expectoration नहीं आ रहा है, due to congestion, when patient gets breathless, उनका saturation down हो रहा है, or having that giddiness kind of feeling, चक्कर आ रहा है, breathlessness हो रहा है, uneasiness feeling हो रही है. In those cases, you can think of this remedy, that is NTM TAT. Patient gets sleepy. It is mentioned in NTM TAT in keynote. Another remedy, that is Senega. Anyone using Senega in your practice? Excellent remedy. Especially this remedy we are using in geriatric patients, old aged patients who are not able to expectorate the cough. It is as equal as NTM TAT and ipecac,
for congestion. Throat feels too narrow. Cough often ends in sneezing, rattling in chest like NTM tart. That is mentioned in Boric. Sensation of oppression and weight in chest, heaviness in chest. Difficult raising of tough, profuse mucus in aged. So you can think of this remedy for congestion without expectoration, as well as they are constantly expectorate. Asthenic bronchitis in old people with chronic interstitial nephritis and chronic emphysema. Guys, ब्रोंकोस्टेसिस के बहुत सारे पेशेंट आते होंगे बिकॉज देयर इज नो क्योर इन ब्रोंकोस्टेसिस. क्या होता है ब्रोंकोस्टेसिस में? Permanent dilatation of the alveoli. Yes, there is no cure of this such cases. In those cases, जब भी ऐसे पेशेंट आपके पास आ रहे हैं आफ्टर कोविड, तो ऑलवेज थिंक ऑफ मेडोराइन. Randomly, you can use this remedy, that is medorinum, for bronchostasis, especially after COVID. We have used this remedy clinically and it works excellently. Another remedy, that is NTM tart, and the more specific remedy which works on bronchitis, that is Kali bichromicum. Along with that typical stringy expectoration, if you get it, it works excellently. If you don't get it, you can use it as a specific. It works on bronchitis, especially when fibrosis wale patient आपके पास आ रहा है. In those cases, you can think of Kali bichromicum along with NTM tart. If you get any rubric from any repertory which works on bronchioles, you just share it on our group. Remedies works on bronchioles or even in alveoli. I never get the rubric from any repertory, but I get ki this remedy works on alveoli. If you get that rubric, you just share it to me. Even Seneca is helpful for vocal cord paralysis. When due to vocal cord paralysis, patient is not able to talk or voice is not clear, hoarseness रहती है और even not able to talk, आवाज बीच में चली जा रही, that is vocal cord paresis. Guys, sometimes it is required to take help of ENT doctors. आपके पास chronic hoarseness वाला पेशेंट आ रहा है, इन बिटवीन आवाज चली जा रही ऐसा पेशेंट आ रहा है, ask the patient to check with ENT. एक बार check करवाओ and you will get the, sometime we are getting polyps on vocal cord or constant hoarseness of voice. Vocal cord polyp, the remedies are calcarea carb. The remedies is argentum metallicum, thuja, and calcarea carb, and causticum. Causticum we can use for vocal cord paralysis. Single muscle paralysis, we can think of causticum. What is the other remedy? Calcarea carb, thuja, causticum, and Argentum metallicum. Even we can think of phosphorus and manganic aceticum. Hoarseness of voice. Guys, open manganic acid.
आज इतना सन्नाटा क्यों? No one is talking anything. सर हॉर्सनेस के साथ में बहुत फोर्स लगाना पड़ता है बोलने के लिए, तो इसके लिए क्या रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं? You can think of argentum metallicum and coca. Even the remedies we are discussing right now, that also helps. Yes, I am not getting manganic acid. Could you please spell out? That is MA or ME? What is it? MANGANUM. Right. See, chronic hoarseness. The remedy of chronic hoarseness. When you use argentum metallicum, when you use that causticum, coca, phosphorus, although you are not getting good result, think of this remedy. Worse in damp weather, that is also in manganic acid. Every cold rouses up to bronchitis, like dulcamara, that is manganic acid. हमने मैंगनीक एसिडिकम कहाँ डिस्कस किया था? Anyone knows? या नहीं किया? In skin, will be discussed yet? Manganic acidicum is remedy for atopic dermatitis, where the eruptions are on folds, especially on elbow folds. The remedy is manganic acidicum, manganum acidicum, प्यूपरम along एसिडिकम with किया blepharitis. नहीं किया था। Sorry? प्यूपरम किया था, ये मैग्नम नहीं किया था जहां तक मेरे नॉलेज में। Okay. So manganic acidicum is also there, and blepharitis is also there for such condition. Sir, natromure is also there. Yeah, we can think of natramine. Lean and thin patient along with hoarseness के साथ साथ जब भी loss of taste होता है, in those cases we can think of this remedy. Loss of taste के लिए the remedies are natramure, pulsatilla, and another remedy is sanguinaria can, that is mentioned in Clark. We use these three remedy extremely in COVID when patient having loss of taste in mouth. Even you can use this remedy in chronic condition or as well as in acute condition. So three leading remedy: NTM tart, Ipecac, and Senega. We are sometimes using both the remedies together. If we get confused, NTM tart, Ipecac 200 kDs. The result matter. Single medicine, two medicine, that doesn't matter. These two remedies, NTM tart and Ipecac, works on pneumogastric nerve. So Ipecac is also helps in nauseative feeling, even in hiccup. Hiccup के लिए कौन सी medicine we have discussed? Hyoscyamus and Cachiputum. Yes, you can think of Ipecac along with these two remedies. Now guys, Grandalia. जब भी पेशेंट आपको बोलता है कि सर जब मैं जैसे ही सोता हूं और जैसे ही लेटता हूं, I got cough. The remedy is Grandalia. Acts on cardiopulmonary disturbance of pneumogastric in dry cattle. Produces paresis of pneumogastric, interference of respiration, smoothing after falling asleep. Asthma condition, chronic bronchitis, blood in sputum, stops breathing when falling asleep, wakes with start and grasps of breath, must sit up to breathe.
cannot breathe when lying down. This is the specific symptom of grandalia. Now, guys, रात को सो जाता हूं और खांसी आती है, जैसे ही लेटता हूं और खांसी आती है। बच्चा रात को सो जाता है, खांसी खाता है और उठ जाना पड़ता है। बच्चा रात को सोता है, खांसी खाता है, लेकिन उठता नहीं है। पेरेंट्स जगे रहते हैं, लेकिन बच्चा इज स्लीपिंग। These are the different conditions on which basis we can prescribe the remedy. Now, बच्चे को रात को खांसी आ रही है और वो उठ जाता है. Remedies are Hyoscyamus. one is hyoscyamus, the another we discussed that is antium tart. Antium tart को खांसी खाते ही बैठ जाना पड़ता है. The remedy is hyoscyamus, guys. Open hyoscyamus. These are the specific modalities. Parents आके आपको बोलेंगे ही, and believe me, guys, medicine works when you prescribe on this basis. Hyoscyamus. Anyone got that symptom in hyoscyamus? Dry spasmodic cough at night, worse lying down, better by sitting up. Yes. उसके ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा है. Dry spasmodic cough at night, worse lying down, better sitting up. The remedy is hyoscyamus. Now open cyclamen. Interesting one is over here in cyclamen. We are using this remedy, cyclamen, when patient is telling you, बच्चा रात को खांसता रहता है, वो उठता नहीं है, हम पूरी रात जगते रहते हैं. Cyclamen is equal to कौन सी रेमेडी है? Pulsatilla. Cyclamen spell out, guys. कौन सी spelling? CY है? CYCLAMEN. Very poor in spellings. मुझे ये सब मेडिसिन मिलती नहीं. Yes, cyclamen. Guys, read cyclamen last line of the first paragraph. Cough at night while asleep without waking, special in children. Another two remedies, that is chamomilla and acid nitricum. When you get this symptom, this is a sure short prescription. रात को बच्चा खांसी खाता है, उठ जाता है. The remedies are Alzheimer's, antium tart. बच्चा खांसी खाता है, उठता नहीं है. The remedies are cyclamen, chamomilla, and acid nitricum. Another remedy, you know, that is drosera. कि सर जैसे ही head is touching to the pillow, बच्चा रात को जैसे ही लेटने जाए बेड के ऊपर, he gets coughing. The remedy is drosera. When patient is telling you, सर मुझे सुबह खांसी एक दो ही आती है और रात को ही खांसी आती है, the remedy is Mephitis. yes, the remedy is mephitis. और सर दिन में ही खांसी आती है, रात को खांसी ही नहीं आती है, the remedy is Euphrasia. कौन बोला ये? Himanshu. कौन है? Himanshi, the remedy is euphrasia. You are absolutely right. Open euphrasia, guys.
Is it written in medicine or book or not? Even you can think of this remedy for frequent yawning, guys. The remedy is euphrasia. Whooping cough only in daytime with profuse lacrimation. When you get this symptom, euphrasia is the remedy for coughing, guys. We are using euphrasia for eyes only. But when we get this symptom, सर मुझे मॉर्निंग में ही खांसी आती है, रात को नहीं आती है और खांसी के साथ आंखों में से पानी निकलता है. This remedy is also remedy for influenza. Acute cough के लिए we can think of this remedy. Even in female, कौन सा symptom है यूफ्रेशिया का? Menses last only an hour or day. Yes. When patient is telling you कि एक ही दिन मुझे डिस्चार्ज आ रहा है या फिर एक आवर ही डिस्चार्ज आ रहा है ब्लीडिंग, you can think of euphrasia. Yes, Sultana, Drosera, when patient is telling you, जब parents is telling you, सर मेरा बच्चा जब भी सो जाता है and when head is touches to the pillow, he got coughing. The remedy is Drosera. And along with coughing, a patient having vomiting, you can confirm the prescription, that is Drosera. Even Mephitis is specific medicine, coughing with vomiting, especially at night. Promet we already discussed. Lamina minor, asthma from nasal blockage. The last remedy we discussed in last session, it is lamina minor. Asthma from nasal blockage, especially aggravation in damp weather, aggravation in heavy rain. That is lamina minor. Another funny remedy, that is Bediaga. I have used this remedy once in my practice, but when you get that symptom, it works excellently. Mucus flies out of mouth and nostril. एक पेशेंट आया था, सी जस्ट टोल्ड मी, सर मुझे बलगम निकलता है तो इतना दूर जाके गिर रहा है. म्यूकस फ्लाइज, बहुत दूर तक जाता है. The remedy is बढ़िया. These are the rare remedies, but when you get the symptom, works. रेमेडी इज, Sorry, मेडिसिन का नाम क्या है सर? that is Bediaga, Badiaga. Please correct me if I'm wrong. Badiaga, Bediaga. Mucus flies out of mouth and nostril. Whatever it may be the cause, asthma है, bronchitis है, लेकिन when you get such kind of expectoration, you can think of this remedy. येलो एक्सपेक्टोरेशन के लिए कौन सी मेडिसिन है? पर्ल्स, काली सेल्फ. यस. दूसरी Calichromicum. Marxol. पल्सेटिला, कालीबाइक्रोमिकम, मर्क्सॉल. Another remedy you just add on in your list, that is hydrastis. Hydrastis is one of the good remedy for bronchitis. Bronchitis in old aged people. Along with Senega, you can think of this remedy when mucus expectoration is yellow and thick. Feel suffocated due to congestion in chest. Excessive sweating along with coughing. Cold sweat हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है. That is very common. The remedy is hydrastis.
addressed scan. Another remedy that is used for coughing is sticta. What are the common indications of sticta? Except the coughing के अलावा कहाँ यूज होती है स्टिक्टा? We are using sticta especially in knee joint pain. When patient is telling you कि मुझे left side knee joint pain है, ONE, the specific remedy sticta. Housemaid's knee is written in Boric. Yeah, like sepia, the remedy is sticta. क्या लिखा है? Housemaid's name here. बोरिक में लिखा हुआ है? Yes, sir. Please read it. Rheumatic pain in right shoulder joint, deltoid and biceps, spot of inflammation and redness over the affected joint. Housemaid's knee, like rustock, scardyhide, and slag. Shooting pains in knees, joints and neighboring muscles red, swollen, and painful. Rheumatic pains precede catarrhal symptoms. Yes. So specific remedy for ONE, especially in old age, you can think of this remedy. Now for coughing, for respiratory, when patient having coughing at night or even at evening, especially at night, you can think of this remedy. Sticta having that symptom, patient having pain on glabella at the root of nose and constant blow the nose but no discharge, along with coughing when bacha is constantly blowing the nose. Blowing the nose is also specific in nux vomica. This is the blowing of nose. Patient is not trying to वो खींचता नहीं है, वो ब्लो करता है, बाहर निकालने का ट्राई करता है. Along with blowing, there is no discharge. Think of sticta. Is it mentioned that pain is on glabella in sticta? Yes, in nose they have given feeling of fullness at the root of the nose. Yes, at the root of nose, patient feels rawness or fullness, that is sticta. Another remedies, pain on eyebrows, pain on root of nose, pain on glabella. Cardiac. Calibike. Yes, then Sanken. Sanken में है ना? Frontal headache, frontal sinusitis. And another specific remedy, that is Viola O या Viola T. Let me confirm. Now that is Viola O. Tendency to pain immediately above eyebrows. Eyebrows के ऊपर pain होता है. The remedy is Viola O. Sanken, Calibicromicum, and Sticta. These are the rare remedies, not frequently used. When we get the symptom, we can think of this remedy. Ammonium carb we have discussed yet? Yes. No? Yeah, yes. Ammonium carb, the specific modality, time modality of ammonium carb? Guys, time modality. 3 a.m. to 4 a.m. Yes, 3 to 4 or 3 a.m. that is ammonium carb. Ammonium carb का patient कैसे आएगा? Anyone? नोज कवर करके. No. That is rheumats.
सर वो ऐसे विक्स वगैरह बाम, वेपर्स हाँ, हाँ, बाम और विक्स हाथ में स्मेल लेके करते हुए। हाँ ब्लू कलर स्मेलिंग बॉटल, एमोनियम का कैरी स्मेलिंग बॉटल विथ हिम और हर, वो विक्स इनहेलर लेके घूमता हूँ, दैट इज एमोनियम का. Ammonium carb is excellent remedy for bronchitis, like antium tart, like ipecac, like Seneca. When you get all the symptoms, nasal congestion, hair, respiratory, nasal discharge, along with patient को bronchitis है, think of ammonium carb. आपके माइंड में एंटियम टार्ट चल रही है, आपके माइंड में इलियम सेपा चल रही है, आपके माइंड में टीएम भी चल रही है, think of ammonium carb. It covers all those symptoms. ब्रोंकाइटिस के एंटियम टार्ट कवर करता है, इलियम सेपा कवर करता है, और इवन टीएमवी भी कवर करता है. Like chamomilla, ammonium carb cannot bear touch or look at him. कैमोमिला के बच्चे के सामने आपने देख लिया तो ही जस्ट गेट इरिटेटेड. आपका आई कांटेक्ट हो गया, चाइल्ड गेट इरिटेटेड. लाइक दैट एंटियम ammonium carb and antium crude is also there. Not like to bath, बच्चे को नहाना पसंद नहीं है. कौन सी मेडिसिन है? Sulfur, antimonium crude, Yes, antim crude. sulfur, and another remedy is antium crude. Nasal blockage, due to nasal breakage बच्चा माउथ ब्रीथ कर रहा है, स्पेशली nasal blockage at night, the remedy is ammonium carb. मॉर्निंग में नहीं होता है सर, रात को ही होता है. Along with coryza, not only nasal blockage. Along with coryza, when patient having nasal blockage, think of ammonium carb. Snuffles in children, nasal blockage हो जा रहा है बच्चों के अंदर. Along with nasal blockage, epistaxis is there. Think of ammonium carb. Nasal discharge along with blood, think of ammonium carb. Or somewhere in some book that is written epistaxis while washing the face, the remedy is ammonium carb. Great aversion to water, guys. It is mentioned in boric. Cannot bear to touch it. The remedy is ammonium carb. The urticaria from water. What is the term for that? Anyone? I have a patient having urticaria from water. I have googled it right now. The term is aquagenic urticaria. It is a very rare condition. It's a person's skin develops red, itchy eruptions, exposure to water. Sorry, Neelam, repeat it. Great aversion to water, cannot bear to touch it. पानी को टच भी नहीं कर सकता है. That is aquagenic urticaria. We can think of this remedy, that is ammonium carb. Like sulfur, like antium crude, uncleanliness. Cleanliness नहीं होती है, that is also seen in ammonium carb. Ammonium carb physically कैसा होता है, guys? Stout women who catch cold easily and are always tired. Okay. लेकिन physical appearance? So structure like ऊपर से थीन रहेगा पर नीचे से फैटी फीमेल रहती है. Yes, अमोनियम बड़े का बड़े hips, बड़े बड़े hips वाले female. The remedy is ammonium carb. Neck is small, upper body is small or short, we can tell it.
लेकिन hips are very big. The physical structure of ammonium. रात को 3 बजे या 4 बजे खांसी चढ़ती है, एंटियम टाट, काली काब, you can think of cupromet and we can think of ammonium carb. Chest feels tired, excessive congestion in the chest, entering in warm room causes aggravation, ascending even a few steps aggravation. The remedy is ammonium carb. Even we can think of this remedy in pulmonary edema. A lady who lives sedentary life have a slow reaction generally, are disposed to frequent use of smelling bottle, as we discussed. सो स्मेलिंग बॉटल में फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं आ सकते? आ सकते हो ना? कैसे फ्रेग्रेंस मतलब? ओके सर, कैसे? मतलब उसको कुछ भी लाइक विक्स और इनहेलर तो चाहिए, बट नॉर्मली अगर कोई फीमेल आ रही है ऐसा स्ट्रक्चर लेके और उस बहुत परफ्यूम और ऐसा लगा के रखा हुआ है तो, और साथ में सिम्टम्स है तो पॉसिबिलिटी। स्मेलिंग बॉटल परफ्यूम बॉडी पे लगाया हुआ तो वी डोंट कंसिडर इट एज दिस सिम्टम. ओके स्मेलिंग बॉटल होनी चाहिए उसके. दैट कैन बी परफ्यूम. ओके परफ्यूम वो लेके स्मेल करता होना चाहिए इन एनी कंडीशन. स्मेलिंग ओके बॉटल होनी चाहिए. पर्स में लेके घूमे डिओड्रेंट, दैट इज डिफरेंट थिंग. लेकिन ड्यू टू रेस्पिरेटरी और एनी कंडीशन व्हेन पेशेंट इज कैरिंग दैट बॉटल, वी कैन सिंपली प्रिस्क्राइब एमोनियम का. और परफ्यूम ज्यादा यूज करते हैं वो कौन सी रेमेडी है? सर डोंट नो सर, इसीलिए पूछा मैंने। बहुत अच्छा तैयार कौन होके आता है? वेरी Arsenic is very well dressed. हाँ आर्सेनिक वेरी वेल Zarat. ड्रेस्ड, लेकिन वो मेकअप करके नहीं आया. So sepia. सेपिया तो मेकअप करती नहीं है. प्लेटिना Satellite. सर, सर प्लेटिना। प्लेटिना वी कैन थिंक, बट लैकेसिस तैयार होके आती है. लैकेसिस ब्राइट रेड कलर की साड़ी पहन के आई है. और यू कैन सिंपली प्रिस्क्राइब फ्रॉम द अपीयरेंस लैकेसिस. इतना बड़ा उसने, ये चांदला को क्या बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में? आई डोंट नो. बिंदी। बिंदी, हाँ यस दैट इज बिंदी. वो इतनी बड़ी बिंदी करके आती है, दैट इज लैकेसिस. डार्क कलर की लिपस्टिक करके, नागिन मूवी का अपीयरेंस, सॉरी, डार्क तो कलर की. नागिन में जो उनके मदर इन लॉ दिखाते हैं वैसा। हाँ या नागिन में. और ये जो हमारी अनुपम और जितनी भी सीरियल चल रही है उसमें जो भी डायन वायन जो भी होती है वो दैट काइंड ऑफ. गोपी बहू की चने वगैरह, सॉरी, कुकर में चने, आपकी कुकर में आवाज, चढ़ा दिए चने वाली आंटी। आपकी आवाज कट हो रही है. गोपी सा नहीं पता है। हेलो हाँ बोलो. सर, कुकर में चने चढ़ा दिए वो वाली आंटी नहीं आपको। आवाज आ रही है. आई एम डेस्परेट टू लिसन इट. कौन सी वाली आंटी? तो कोकिला बेन के सर बारे में कुकर बात पे कर चने रही चढ़ा है। दिए वो वाली ओके कोकिला आंटी, ओके बेन। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट. तो बड़ा बड़ा बिंदी और वो ऐसा। हाँ, बड़ा बड़ा बिंदी करके लैकेसिस तैयार हो गया. दैट काइंड ऑफ फीमेल यू कैन प्रिस्क्राइब ऑन दैट बेसिस. लैकेसिस नहीं, ऑल द ऑफिडिया ग्रुप, लेकिन फ्रीक्वेंटली यूज रेमेडीज लैकेसिस. These are the common remedies for respiratory. I hope इससे ज्यादा कोई मेडिसिन आपको रेस्पिरेटरी, स्पेशली लोअर रेस्पिरेटरी में आपको यूज नहीं करनी पड़ेगी. These are the common remedies. We are frequently using it and it works.
बच्चों के अंदर गाइस नेजल ब्लॉकेज इज वेरी कॉमन. नेजल पॉलिप हो या ना हो, nasal blockage is very frequently seen in kids. What are the remedies? कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे? Sambucus, TMV, Sembucus, TMV, ammonium carb is also there. carb is also there. Lamina minor, Sancan. Yes, definitely. Lambda minor, Sancan, Nitricum. And another my favorite remedy, that is Sinapis nigra. What is Sinapis nigra? तो Sambucus nigra भी अच्छा काम करती है. Sembucus भी अच्छा काम करता है. Generally, I use that only. Yes, that is specific medicine for nasal blockage. I frequently use before. Nowadays, Sembucus use नहीं करता हूँ. पता नहीं, आपने याद करवा दी तो अब चालू करूंगा. Sanapis इसका अपग्रेडेड वर्जन तो नहीं है सर कहीं? वो पता नहीं है. लेकिन Sembucus बहुत सालों से मैंने यूज नहीं की. I don't know why. वो माइंड में ही नहीं आती. Now you recall me Sembucus. सर बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है सर. मस्त रिजल्ट देती है. हाँ. Randomly you can use Sembucus nigra for nasal blockage, guys. See, ऐसे शेयर करने से हमें भी सीखने को मिलता. कई मेडिसिन रूटीन में यूज नहीं होती है तो वी जस्ट फॉरगॉट इट, वो भूल जाते हैं. सर जनरली आप स्कोप ही नहीं छोड़ते हो और कुछ नया नया लेकर ही आते हो तो कैसे? बेसिकली होता वैसा ही है. आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप कुछ नया नया ट्राई करते रहते हो, तो उसमें पुरानी मेडिसिन भूल नहीं जानी चाहिए, याद रहनी चाहिए. लेकिन दैट इज हैपनिंग एज अ होम्योपैथ. बहुत सारी मेडिसिन है, कितनी याद रखोगे? जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है वो याद रह जाती सर मेडिसिन रखी है, यूजेस भूल जाते हैं. क्यों मंगाई थी लिटरली? है. एक्चुअली मेरे पास बहुत बड़ी फार्मेसी है होम्योपैथी की. मेरे पास बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन मैं अभी तो नाउ स्टाफ मैनेजिंग, अप्रोक्स कितनी मेडिसिन आपके पास होगी? आई एक्चुअली वांट टू नो. मतलब वो मुझे याद नहीं है. मेरे पास पीडीएफ फाइल है. नाउ स्टाफ इज हैंडलिंग ऑल द थिंग्स. लेकिन कभी ऐसा होता है कि मैं ये लेक्चर वगैरह लेता हूँ और कोई पेशेंट आके बैठा होता है तो आई हैव टू प्रिस्क्राइब द रेमेडी. और मैं जब भी फार्मेसी में जाता हूँ तो मुझे तो अभी मेडिसिन ढूंढनी पड़ती है. बिफोर ऐसा टाइम था, आई यूज टू मेक मेडिसिन, तो मेरे टेबल के अंदर ही आई हैव अरेंज सच थिंग. वो सेटअप अभी भी है, लेकिन अभी स्टाफ अरेंज करता है. तो ऐसे जब कोई ना हो, इन दोस केसेस आई हैव टू मैनेज विद सच थिंग. तभी मुझे ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि ये मेडिसिन भी मेरे पास है. मेरे पास पूरी बैच फ्लावर की पूरी किट पड़ी है. आई एम नॉट यूजिंग दैट रेमेडी. वो जोश जोश में मंगवा लेते हैं, लेकिन फिर वो कभी यूज ही नहीं हुई. लकीली मैं सोच रहा था, मैंने मंगाया नहीं है सर बैच फ्लावर. कभी चाहिए तो मुझे बोलना, आई विल सेंड यू, मैं आपको भेज दूंगा. सर अब लग रहा है कि अच्छा हुआ नहीं मंगाया, यूज भी नहीं आ रही उतना. कई बार वो रूटीन मेडिसिन से जब रिजल्ट मिल रहा है तो रेयर मेडिसिन यूज करनी नहीं जरूरत पड़ती है. तो रेयर मेडिसिन रेयर ऑफ द रेस्ट यूज करनी पड़ती है, तो फिर वो पड़ी पड़ी सूख जाती है. ऐसा भी होता है. तो साइनोपिस नाइग्रा, mucus from posterior nares feel cold. Even this remedy is the specific remedy for post-nasal drooping. A scanty acrid discharge, stop of left nostril all the day or in afternoon and evening. तो पूरे दिन के टाइम में जब भी नेजल ब्लॉकेज होता है, स्पेशली लेफ्ट नोस्ट्रिल, यू कैन थिंक ऑफ साइनोपिस नाइग्रा. और जब पेशेंट आपको बोलता है कि मुझे रात को ही नेजल ब्लॉकेज हो रहा है, देन थिंक ऑफ एमोनियम कार्ब. एंड कई बार पेशेंट इज टेलिंग यू कि आप पूछोगे कौन सी साइड का नाक बंद होता है, तो पेशेंट इज टेलिंग यू कि कई बार राइट साइड, कई बार लेफ्ट साइड. तो ऑल्टरनेट ब्लॉकेज, nostrils alternately stopped. The remedy is Sinapis nigra.
Anyone you knows the synapse nigra ki abdominal modality? Ameliorated by sitting. Colic or pain ameliorated by sitting. Yes, ameliorated by sitting, ameliorated by bending double, ameliorated by bending backward. These are the remedies. Folding double, कौन सी medicine है? Magphos and colocynth. और bending backward, Diascoria. गजब. And sitting amelioration, that is synapse nigra. These are the thing मैं repeatedly repeat करता हूँ, लेकिन ये repeatedly repeat करने का reason ही ये है, it works. आपको ये modality practice में मिलेगी और उसके ऊपर से नहीं जाना है acute में mind ढूंढने. When you get such modality, simply prescribe. आज ही अभी last 2 patients से पहले का patient just told me कि सर मुझे 12 साल से headache है, which is ameliorated by this. ऐसे ही दर्द कम होता है. Not like this. ऐसे ही. कौन सी मेडिसिन? Guys. सर कैसे लिया सर? इसको प्रेशर में लिया? हाँ प्रेशर में लिया, लेकिन कैसा प्रेशर? That is hard pressure. बॉनी थिंग है. This is the body thing. ऐसे नहीं कम हो रहा है, ऐसे नहीं कम हो रहा है, बॉनी थिंग से कम हो रहा है. That is hard pressure amelioration. You just do it like this. आप ऐसे प्रेस करोगे और ऐसे प्रेस करोगे, there is vast difference. The hard thing, which is sternum mat. Hard pressure gives amelioration. That's it, guys. बहुत सारी रेमेडीज हो गई for coughing, especially in pediatric cases. इतने में तो coughing क्योर हो ही जाएगा. That is bare sure. And one more thing I would like to say, especially in coughing, जब भी आपने कोई medicine prescribe की and in another follow-up when the discharge is changed, now you have to change the remedy. Don't stick to that pulsatilla or Maxol when the in next follow-up discharge is white. Think of Dalcamara, think of Calimure. Calimure having the white discharge. Anything white, that is Calimure. That's it for today's session. Coughing is almost done. If you still have any query, any remedy in your mind, if you are using any remedy like Sambucus nigricum, then guys, you just share it with us. That will be helpful to everyone. If you are using any specific remedy in your practice like Spidosperma or anything, you can share your experience. That will be helpful to everyone. We have read these remedies frequently in our Materia Medica. We have gone through in first year, second year, third year in our Materia Medica. But guys, clinical experience matters. आपको जिस चीज से रिजल्ट मिल रहा है वो प्रिस्क्राइब करें एंड शेयर इट विद द पीपल. कोई आपके पेशेंट नहीं ले जाने वाला है. कोई होम्योपैथी के पेशेंट आपके नहीं लेगा. शेयर योर एक्सपीरियंस, उससे होम्योपैथी बढ़ेगा. If some doctor get result in that area with the same remedy, homeopathy कुछ आगे बढ़ेगा. This is the era of homeopathy, guys. मजा आने वाला है in next 5 or 10 years. Guys, you believe me, you are practicing in best phase of homeopathy. Next 5 years में homeopathy can teach by anything. Since 2 or 3 years after COVID, we are seeing that MD physician उनके बच्चों के साथ होम्योपैथ के पास आ रहा है. Recurrent cold and cough है बच्चों में. Pediatric practice nowadays are like anything. Parents can give anything for children's health. तो हमें anything तो नहीं लेना है, लेकिन we can earn from it as homeopath. Don't charge like anything. 5,000 6,000 मत लो. 150 200 में satisfaction लो when you get the result.
one question is from there from Rajitha, which is the remedy the cough aggravate from fan? Guys, कौन सी remedy है? I think Rumex. Rumex is there, and another remedy. Slightest wind causes coughing, that is Hepar sulf. Hepar sulf. पंखा शुरू किया और get coughing. The remedy is Hepar sulf, which aggravates from exposure to wind, any kind of wind. That is Hepar sulf. In next session, we will cover that nasal blockage if required. Nasal polyp पे एक थोड़ा cover कर देंगे. Or if you get bored with respiratory, we can go with GI tract. Not an issue. क्योंकि constant respiratory चलता रहता है, तो it is quite difficult to digest. So let's see. Next session में कुछ नया करते हैं. Natural analysis वगैरह ले लेते हैं. चलो, let's change the topic. सर ये ओल्ड एज पीपल बहुत कंप्लेन करते हैं कि गले में कफ रहता है, गले में सर वो भी दिया है, ब्रोमियम भी दिया है, पॉस्टिकम भी दिया है, रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, और कोई स्पेसिफिक मेडिसिन सर? ये ज़ाबिया ने जो बताया था ना सेलेनियम, that works. आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने. ओके, सेलेनियम जब भी पेशेंट आपको आके बोलता है आई एम गोइंग टू ट्राई इट है ज़ाबिया, मैंने अभी तक ये सेलेनियम यूज नहीं किया, आई एम गोइंग टू ट्राई इट, वो मेरे माइंड में है, जब भी पेशेंट आएगा आई विल यूज इट. सर गले में कफ भर जाता है और मॉर्निंग में एक्सपेक्टोरेशन होता है, दैट इज वेरी कॉमन इन जीरियाट्रिक पेशेंट्स. यू कैन थिंक ऑफ सेलेनियम. कॉस्टिकम यू ऑलरेडी यूज्ड, ब्रोमियम यू ब्रोमियम यूज्ड, भी यूज किया है. यू यस कैन सर. थिंक ऑफ एंटीएमटाट. गले में और चेस्ट में कफ भर रहा है, निकल नहीं रहा है, यू कैन थिंक सर ऑफ स्मोकर्स एंटीएमटाट में एंड भी यूज फेनेल. कर सकते हैं ना सर, क्रोनिक स्मोकर्स में? क्रॉनिक स्मोकर्स में क्या? सर मॉर्निंग कफ होता है उन लोगों को. हाँ, उनको मॉर्निंग कफ होता है, यू कैन थिंक ऑफ सेलेनियम. सर उनका कंप्लेन एंटीएमटाट जैसा नहीं है कि चेस्ट में कफ है, वो लेकिन कांस्टेंट गले में भी में. कफ, हाँ, तो हाँ. गले में कफ हो या चेस्ट में हो, कंजेशन जहां पे भी हो, कफ भर गया हो, तो एंटीएमटाट हेल्प्स टू एक्सपेल आउट. एंटीएमटाट वो बाहर निकालने में काम करेगा, यू कैन थिंक ऑफ एंटीएमटाट. ओके सर, ट्राई करता हूँ. Sir, can we use coccus cacti in that case? यस, कोकस कॉकटाई स्पेशली इन मॉर्निंग कफिंग, जब भी व्हाइट एक्सपेक्टोरेशन, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन कोकस कैक्टाई इन व्हाइट एक्सपेक्टोरेशन. जब भी मॉर्निंग कफिंग है, मॉर्निंग में खांसी आती है और कफ भर जाता है, विच इज एम्यूलरेटेड व्हाइल ब्रशिंग. जब भी ब्रश करते हैं और पित्त निकलता है या कफ निकलता है, यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी, दैट इज कोकस कैक्टाई. मॉर्निंग कफिंग, एक्सीलेंट रेमेडी. स्ट्रिंजी एक्सपेक्टोरेशन, when the stringy expectoration is yellowish, think of Calibachromicum. When it is white, think of Coccus cacti. Question When it is stringy and ropey, and it is yellowish, we can also think of Crocus sativa, na? Saffron kesar. sativa का expectoration पता नहीं. I have never used this remedy. That is prepared from saffron, right? The expectoration is saffron. No, prepared from saffron. हाँ, तो उसका expectoration, that doesn't mean कि saffron जैसा ही होना चाहिए. Let's check. Spell out करो. CROCUS. Even I am not sure. Let's check it. There is threads like pine twine. So thread like stringy expectoration, we can think of this remedy. It is more of hemorrhagic. हाँ, yellowish नहीं है, more of hemorrhagic है. हाँ, hemorrhagic हो तो that is Dark, हाँ. And the more specific symptom of Crocus sativa is something is alive in abdomen.
पेट में कुछ बच्चा घूम रहा है या something is alive moving in the abdomen, you can think of this remedy, puja and crocus sativa. Crocus sativa is all about hemorrhage, bloody discharge, so we can think of this remedy. Yes, one question is from the Sultan. Continue sneezing due to with touching water. Spasmodic sneezing, guys. कौन सी remedy? Spasmodic सबडिला remedy is sabidilla. और touching water remedy is calcarea carb. पानी को टच करते ही तकलीफ होती है. Think of calcarea carb. मेरे पास एक पेशेंट था, used all the remedies. She just told me in every visit, सर मैं शाम को कपड़े धोने बैठूं या शाम को चौकड़ी में जाऊं तभी मुझे खांसी चढ़ती है. जब भी मैं पानी में पैर रखूं मुझे खांसी चढ़ती है. Even during the 6 months of pregnancy, she gets cough, which is ameliorated by calcarea carb only. बहुत सारी मेडिसिन यूज कर दी. Even when I get that symptom and prescribe on that symptom, patient gets relief. Calcarea carb, touching the water, aggravation. You can think of ammonium carb as water aggravation. Any question, any query, guys? डॉक्टर लास्ट टाइम वो डायबिटीज वाला आपका अप्रोच बाकी था थोड़ा. इफ यू कैन जस्ट थ्रो Diabetes सम में, लाइट ऑन योर diabetes में you approach. can, yes. Diabetes में you can think of Natrum Sulf 6x. Our routine prescription is NS6X TDS, acid phos 1 mHs, and Syzygium jambulinum, mother tincture TDS. और एक बार. Natrum Sulf 6X TDS, acid phos 1 mHs, and Syzygium jambulinum, mother tincture or in 30 potency TDS, mother tincture 10 drops 3 times. If This it is is the same. This is the same prescription for pre-diabetics also when the HbA1c is less than. same. Okay. As a preventive, you can use the same remedies. These are the specific remedies that works. और Syzygium is excellent remedy. वो तो काम करने वाली ही है. When symptomatic are there, you can think of excessive urination के लिए acetic acid, excessive urination के लिए acid phos, libido diminished और infertility due to diabetes. कौन सी मेडिसिन? acid phos. Acid phos. दूसरी 3 remedies are there. ओलिएंडर. Sorry. ओलिएंडर. Oleander तो मुझे पता नहीं है वो तो. Please check it and read it. कोका चेक करो. Is it mentioned in coca? Coca and Moscus we check. Yes. Diabetes with impotency, that is coca acid phos. And another remedy is Moscus. Moscus में भी होना चाहिए. Yes, sir, it is in Moscus. Yes. So impotency due to diabetes mellitus, that is very common after age of 50. बहुत सारे मेल पेशेंट आपके पास आएंगे. Yes, sir, there is difficulty in erection. You can think of this remedy. Acid phos, coca, and Moscus. We are giving uranium nitricum as a single dose in diabetic patient. Zoabia. Uranium nitricum. According to one of the doctor from Kerala, he is using Muxol and Sepia as a specific remedy for insulin dependent patient of diabetic. And he claimed that he is curing the patient of diabetic mellitus. Curing, I am using that word, curing.
sepia and sepia and Merck salt. सर आप वहाँ सेमिनार में गए थे, उसके बाद आपने यूज करके ट्राई किया है क्या? कंफर्मेशन हुआ है क्या? मैंने सेपिया यूज किया है और आई डिडंट गॉट रिजल्ट विद सेपिया. और ये यूरेनियम नाइट्रिकम पोटेंसी में यूज कर रहे हैं क्या सर? 206x हाँ, वगैरह तो आता है, पोटेंसी 6x में में आता है. हाँ, 30 और 200 में एवरी वीक यू कैन यूज इट. वीकली डोज. वीकली डोज. सर अगर ये एमएस और ये वाला अगर कंफर्म होता है तो प्लीज डू शेयर इट. मुझे उनसे बात, ही इज वेरी बिजी प्रैक्टिशनर, तो कई बार वो फॉर्मल चैट होती है, यू डोंट गेट चांस टू आस्क हिम. अभी चांस मिला तो आई विल आस्क हिम. Okay guys, any doubt, any query? It's raining outside guys in Ahmedabad. Anyone having raining over there? सर बड़ौदा आयोडम में कैसा है? no डिस्कस कर rains in Vadodara. Only windy weather and very humid and hot. AC is on. I'm sitting in a room with AC temperature at Damp 20. weather. Yes. सर Okay वो guys. आयोडम सीएम वाला एक सेकंड डिस्कस कर लें क्या बस? हाँ, वो कैसा रहा आपने? Did you use it? सर वो फर्स्ट वाले में बहुत अच्छा रिस्पांस था, सेकंड वाले में आज ही फोटोग्राफ शेयर हुआ है तो उतना कुछ मतलब पॉजिटिविटी दिख नहीं रहा है इस बार. इस बार भी वैसे ही मैंने दिया था, फोर्टनाइट पे 4 डोज. Okay. तो अब सर 1 ईयर कंप्लीट हो गया है पेशेंट को, मेरे पास आज ही नहीं पेशेंट ने भी मतलब आयोडम दिए 1 ईयर हो गए? नहीं नहीं नहीं, अभी पहले 200 वगैरह में ओके, मैंने वो यूज सब किया दिया है था. हाँ, गॉट इट, गॉट इट. बट वो सीएम में अभी 2 बार अपन यूज कर चुके हैं. और 1 महीने जाने दो ना, लेट्स सी. ठीक है, मेरे तो फिर पास नेक्स्ट सीएम. मेरे पास भी एक पेशेंट आ रहा है. ही इज कमिंग फ्रॉम सूरत. वो 2 साल से आ रहा है. देयर इज नो चेंज. Are you all using iodine for thyroid, hypothyroidism? I am using it. I already used in that patient. Lekin didn't get result. Okay. I have even used Spongia in that patient. Even for goiter, I used. सर कालिकाब यूज करके आप देख लेना, मुझे 1-2 केसेस में रिजल्ट मिले थे. Okay. नेट्रम्यूर कालिकाब. Netramur, yes, I I used have it. got, doctor, I have got result with thyroidinum 1M. Yes, हाँ सर, मैं thyroidinum. सोच रहा था थायरोडिनम 1M के लिए. Thyroidinum every week repeat करो 1 m. It सर works. वो थायराइड वाले में तो एक्सीलेंटली वर्क कर रहा है. थैंक यू सो मच फॉर इसमें दैट. भी you can. उसके लिए Basically, और see, तो आप मैं कुछ थायराइड में ऐड करते हैं क्या सर, इसके अलावा थायरोडिनम 1M मुझे के तो अलावा? thyroidinum से रिजल्ट मिल जाए. हाँ बहुत अच्छा है सर, डेफिनेटली, नो डाउट. थैंक यू सो मच फॉर दैट. Spongia भी you can use. Even in young female, when there is thyroid or goiter, we can think of calcarea iode. If I'm not wrong, calcarea iode is remedy. देखो, is it mentioned in calcarea iode? Goiter in young female. और बराटा सर iode भी. सर ये थायरोडिनम 1M Yes, हाइपर sir. थायरोडिज्म में भी यूज कर सकते हैं अपन? Sorry, हाई कर सकते हैं ना? sorry, क्या किसमें यूज कर सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ सर, हाइपर थायरोडिज्म में भी अपन थायरोडिनम 1M यूज कर सकते हैं? हाँ, यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं. वो स्टेबलाइज करता है TSH, तो we can ठीक. think of more specific Netramute for hyperthyroid. Lean and हाइपर, thin constitution, तो Netramute hyperthyroid में अच्छा काम हाँ करती है. नेट्रम्यूर 1M ही दिया है मैंने आज एक हाँ, पेशेंट को. Netramute works hyperthyroid. Calcarea iode में है guys? Yes, sir. Thyroid enlargement about time of puberty. Sorry, Thyroid enlargement about time of puberty in calcarea iode. that is mentioned in Calcarea iode, right? Yes, sir. And paragraph, first paragraph, third line. हाँ, thyroid enlargement about time of puberty, that is Calcarea iode. और कैसा होता है बच्चा Calcarea iode को, you know, Baraita और Calcarea iode का? Adenoids are enlarged, Calcarea iode and Baraita iode के अंदर. और वो बच्चा माउथ ब्रीथिंग करता है ड्यू टू नेजल ब्लॉकेज. एडेनॉइड्स होते हैं. एडेनॉइड्स के साथ साथ वो नेजल ब्लॉकेज भी हो सकता है. तो फ्लैबी कैल्केरिया कार्ब लाइक चिल्ड्रन, और उसके साथ वो स्टूपिड लाइक अपीयरेंस होता है. वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी, दैट इज बराइट आयोड इन कैल्केरिया.
Okay, guys. See you in next session with same energy, with new remedies and new talk. See you guys. Bye bye. Thank you, sir.